ladies and gentlemen. Recently, we lost our founder member and trustee, Sardar Mahib Singh Ji. In his memory and memory of all those who lost their lives in 1984 riots, all the children, all the ladies, all the gentlemen, whosoever, wheresoever in India lost their lives, in their memory, may I request you all to kindly stand in silence and pay homage to them. Thank you very much, ladies and gentlemen. I take pleasure to welcome you all for this 31st anniversary of the carnage, now the genocide 84. You just heard about the founder member, Dr. Mahib Singh. Dr. Narang will cover on that a little later, little more details. Before we proceed further with the eminent speakers who are available with us, we'd like to have the book release. A revised volume of Genocide 84 has been out, and we'll be releasing it now. This is basically a contributory item, and we will request most of the members, those who want to take it and give to their friends and send across, they can do so. We have kept a very nominal price of ₹100. This is far improved than the last time, and we'll continue to improve this further in the next session when we have it. I request all our respected old members and the trustees to come forward and release the revised volume. Dr. Anup Singh, Dr. Narang, Dr. Ms. Fulka Ji, Ms. Brinda Karat, Ms. Harminder Kaur, Hartosh Pal Ji, Mr. Rahul Bedi, Major B.P. Singh, Sardar Iqbal Singh, Gurveer Singh Ji Alag, and Sardar Manoj Singh Ji Batra. Our efforts are on to include the name of all those victims who died during 84 outside Delhi, that means Bukhara, Jamshedpur, Kanpur, and other locations. And the next edition, when it comes, all the names will be included. Now I'll request Dr. Amarjit Singh Narang to come and start the proceedings. Since it is a commemorative meeting without any niceties, may I request all these esteemed speakers to please join us here. The President, Vice President of the Forum. All speakers are requested to please come on the dais. Rahul, Harminder, Brinda, please. Hartosh,
हरतोष, प्लीज। डॉक्टर साहब को बुलाओ, अनूप सिंह जी ਨੂੰ। So these people who've come, they come from the I think speakers will not mind because we have to address all the audiences who will be speaking in Hindi, Punjabi and English So where mixed. do they live? They live where? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੋਕ ਸਾਡਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ਆਕਾਸ਼ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਔਰ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। But from 1980 onwards, there was a complete shift in Mahip Singh's personality. Dr. Mahip Singh, General Arora, Kuldeep Nayyar, Inder Gujral, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਜਸਟ ਟੂ ਸੀਇੰਗ ਐਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਇਟ ਇਨਫੈਕਟਿਵਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ controlled media, so no information about the activities of these people were brought to the notice of the people. Okay, what attempts were being done to weed out extremism and all those types of situations. Unfortunately, June 84 happened. Again, a delegation led by General Arora, Dr. Mahip Singh, Kuldeep Nayyar, myself, we went to Punjab immediately after Operation Blue Star. We talked to persons like Longowal ji, Badal Saab, to give them a feel that moderation is the requirement. Fight for human rights through democratic means is the right approach. Or Dr. Mahip Singh particularly took pains to bring Longowal ji in Delhi. Delhi ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਲੋਂਗੋਵਾਲ's meeting Vrinda, one was in Delhi University, one was in JNU, one was at Manushi's office, Lajpat Nagar, and final meeting was held at Sapru House. And in that meeting, Longowal ji said ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਚੇਂਜ ਹੋਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, 5 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਨ ਸੀਗੇ, ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਟ ਦਿਸ MP ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਅ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਹੈਲਡ ਐਟ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਕਲਾ ਸੰਗਮ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਫਲੋਟ ਹੋਇਆ ਕਿ the concerned Sikhs should come forward, speak both against the violation of human rights and also against extremism. That was the foundation of Sikh Forum in Triveni Kala Sangam in the middle of November 84. At that time, General Arora was made the president of the forum and Dr. Mahip Singh was the founder secretary with Dr. Amrik Singh as vice president. ਫੋਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ 4 ਕੰਮ ਲਏ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਰਿਲੀਫ ਐਂਡ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੈਮ ਰਿਲੀਫ ਐਂਡ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ। ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਏ ਟਰਸਟ ਫॉर दैट ਆਲਸੋ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਮੂਵ ਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਮੂਵ ਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਲੜਨਾ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ anyhow, we get ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। Yeah, this is what. So the idea was that people should not, people should not rush towards Punjab. एक जनरल डर कि दिल्ली के लोग, कानपुर के लोग, they are not safe here and they should run to Punjab. That was one of the major concerns of the forum, that it should not be done. And also it was forum's concern that younger people should be counseled and not allowed to go to extremism. So with these four aspects, we started this forum. General Saab wrote first article in Hindustan Times, I am Indian by what you call right. And that then from on that, and particularly Dr. Mahip Singh and General Roda, they went all over India. एक एक गुरुद्वारियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਬੰਬੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਔਰ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਛੋੜ ਕੇ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਏ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਰ। ਡਾਕਟਰ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਸੰਚੇਤਨਾ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਰਿਸਰਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ। ਰਿਸਰਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਥਲੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਬਣਾਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ particularly to Hindi knowing media। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਹਿਸ 75th ਬਰਥਡੇ ਔਰ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮੈਮੋਰੇਟਿਵ ਵੋਲਿਊਮ ਸੀ, ਆਈ ਰੋਟ ਏ ਪੀਸ ਔਨ ਦੈਟ women, many people, because most of his friends were academics and what you call writers, so they wrote on that, his writing and all that. But I contributed a piece, Dr. Mahip Singh as a human rights activist. So with that, Dr. Mahip Singh had a long career, and for last month or so he was not keeping well. In fact, he could not attend even last 1 or 2 meetings because of his health. And just 3 days back on the 24th, he breathed his last, and here we are paying his tributes to him today. और सोमवार ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਉੱਥੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਹੋਏਗਾ। All of those who are interested or who are available, they can come and visit him there. With that, I think you all join me paying our heartfelt tributes to Dr. Mahip Singh and our total, what you call, solidarity with his family. He has 2 sons, Jaideep and Sandeep, क्योंकि आज ही उन्होंने कार पाठ वगैरह रखे, otherwise I went to his house today. शायद हो सकता सी आ जाते, but because of the situation and all that is situation. But on behalf of Sikh Forum and all the speakers who are present today, I'll convey the feelings of the house to him. I think with that we can start the proceedings for the day, this today, right? Dr. Saab, we can start with the children statements. Yes, that's right. But I may wish to add one point on Dr. Mahip Singh ji. ਕੁਛ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੋਲਿਊਮ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਪੋਕ ਟੂ ਹਿਮ, ਹੀ wrote a very nice article for this volume, which incidentally is included in the volume being released today. Maybe one of his last writings. So, right. Friends, as has been told to you, that at the time, along with the formation of Sikh Forum, a separate trust under the auspices of Sikh Forum was formed to help the victims and also for long-term, what you call, a assistance program to victims of any type of riots. It was not limited to Sikhs. In the trust, it's clearly written that it is not for trust, because Sikh Forum took a cause that our concern is humanity as a whole. Anyone who's there. So in that process, we started, and we have been working that. In fact, initially, we adopted a lot of children for their education up to class 10. A few thousands children were adopted,
And these were adopted not by the forum, but by individuals. We were only managers. They were providing their money for annually for the education of children up to class 10th, and thousands were paid. And again, some of them are still being paid. And today we have received a special grant from one of the trustees, Dr. Sardar Gurpreet Singh, to give to those children. So I am requesting Bhavneet to please come here and say whatever is there about that and get that money disbursed to the children for whom this has been given. Bhavneet, please. Sat Sri Akal ji. I would like to thank the Sikh Forum, especially Major General Chadda, to introduce me to such a beautiful convention that has been doing so much work and effort for the reassertion of democratic rights to our Sikh community and, as they said now, humanity, which is the most important thing. Having young children at home, my heart is so thankful and goes into gratitude to the forum for helping out these lovely children, very, very hard-working children who've done extremely well in their studies, and they've been supporting, the forum has been supporting them, and we'd like to give them out stipends from the forum. And of course, like we said, that another trustees additionally added another, sum of amount. So it's an honor to spell out their names. This is Beta, thank you so much. Tusi bahut changa kita hai. We are very proud of you. And yeah, I think give them a big applause. Yeah, thank you. Sachin Singh. Thank you. Simran Kaur. हाँ जी, वो स्टेपल्ड है क्या नाम जी? सचिन सिंह। Very good. Simran Kaur. Balveer Singh. Charanjit Singh. Charanjit Singh. Jyoti Kaur. After Jyoti, Simranjit Kaur. Let's continue to give them applause, please. I think they all feel happy, appreciate it. They're mostly all above 80%, considering that they have so much difficulties. Simranjit Kaur. Oh, sorry. Then is Simran Kaur. Nisha Kaur. Nisha Kaur, yeah. Simran Kaur, this is Simran. Nisha Kaur. Nisha's coming. Then Jaspreet Kaur. Oh, really? Harmeet Kaur. And Simran Kaur is not here. She's actually done very good in her 10th with 86%, and she's looking to do MBBS. And then we have Jasbir Singh, he's here, who's also done very well at 85 in his 12th, and he's looking to do engineering. So for these last two children who are named, that we would like, if you'd like to adopt them and take them further for, help them for their further higher education. Very good. Thank you. Thank you, Ji. Sat Sri Akal. No, these two last name children, they are keen for higher studies. One is for the BTech, other girl wants to do MBBS. Their families are very, very poor, laborers' children and all. It is requested if some person can come forward to adopt them for their education through the Sikh Forum so that you can get the advantage of ATG. Hello.
This adoption is very simple. You don't have any responsibility in that strict sense of adoption. Adoption is purely some sort of what we call an administrative. You adopt a child, send money to the Sikh Forum. On behalf of you, that money will be sent to the child or his or her parents. You will get the full details of that family along with the photograph of the child and the 6 monthly progress the child is making, so that you have a sense that he or she is your child without any legal liabilities or responsibilities. That is what we did from 84 onward. Simple is an adoption in that what you call, we're very using but spiritual sense, not in legal sense. You don't have any legal responsibilities, but still you will have a feel. After every 6 months you keep on sending the report card, the progress the child has made. So it is in that sense what General Sahab has said. So please come forward again, we are looking for that. Friend, now we are starting this commemorative meeting. Since everyone knows what happened on that day, but it is now 31 years. And what happened on that day we have been remembering every day, every year, and we cannot forget that. But after that, what is important for all of us is justice. Not pure and simple solace from the governments of one after the other that we are very sorry for that. That sorry here and there doesn't mean anything unless those who are perpetrators of those types of situations, they are punished, even symbolically punished, but they have not been punished. And for that, Sikh Forum has been working actively, along with many other NGOs. Civil societies have been doing a lot of work for that. But among all them, there's a one-man army, Harvinder Singh Fulka. ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਟਿਲ ਟੁਡੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਦੈਟ. Therefore, I will like that before others speak, he can give just once again us whatever has been the status of this demand for justice, rather than paying simple tributes those who died. Fulka Sahab, please. And my humble request to all speakers is, keeping in view the evening time and little change in weather, that we can have about 10 minutes each, so that the proceedings are taken well in time. Thank you. Nanda? Tell me when my 10 minutes are over. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਛਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ. ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਿਲਰ ਸਨ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ सही एडवाइस देनी, सही तरीके ले के जाना. और मैं तो अपना पर्सनल लॉस बहुत ज़्यादा समझदा. छतवाल साहब पहला गए उदों तो हुण डॉक्टर महीप सिंह रह गए सी, वो भी नहीं अज रहे. अज वाली इस मीटिंग दे विच मैं कुछ थोड़े अहम मुद्दे खड़े करना चाहना, बोलना चाहना. 31 साल हो गए आपां नूं यही कहंदे कि साडे नाल की होया. हुण तक मेरा ख्याल आ जिन्हां नूं पता लगना चाहिए उन्हां नूं पता कि की होया. हाँ ठीक है, यंग जनरेशन दसना दूजी गल आ, पर जिन्हां नूं नहीं पता, करना ही नहीं चाहुंदे, उन्हां तां तुसीं चाहे 31 साल की चाहे 62 साल दस लो, उन्हां नूं पता नहीं चलेगा. मैं एक तां चाहांगा कि इत्थे मैं हिंदी च बोलां, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ने जो अंग्रेजी नहीं समझते, कुछ ऐसे ने जो पंजाबी नहीं समझते. मैं अगर आज पीछे थोड़ा याद करूं, मेरी उम्र 28 साल की थी 1984 में, जब ये कत्लेआम हुआ.
और सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा टाइम आएगा कभी जब कि मैं ही इसका पिलर बन जाऊंगा, सारा मेन लड़ाई मैं ही लड़ूंगा। मैं तो एक 3 साल के एक्सपीरियंस वाला वकील जो अपना थोड़ा सा रोल प्ले कर सकता है, मैं तो वो करने के लिए गया था। आज 31 साल हो गए हैं और अभी अभी मेरा ख्याल है मैं कभी भी 30 साल में कभी म्यूज नहीं हुआ था। जब भी कोई फेलियर होता था तो और एनर्जी आती थी कि और जोर से लड़ें हम इंसाफ के लिए, और उससे भी ज्यादा यहां पे प्रूव करने के लिए कि इस देश में कानून सबसे ऊपर है। ये पॉलिटिकल लीडर कानून के नीचे आते हैं, ये कानून से ऊपर नहीं है। मैंने बहुत बार कहा है, अगर 1984 के कातलों को सजा होती तो हमें 93 में मुंबई ना देखना पड़ता, 2002 में गुजरात नहीं, और आज जो मॉब फ्रेंजी में कहीं दादरी हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, हमें जीना देखना पड़ता। एक तरह का मैसेज गया 1984 में कि ये जो कातिल हैं उनको जेलों में नहीं मंत्रियों की कुर्सियों पे बिठाया जाएगा। वो जो ट्रेंड शुरू हुआ, बस वो ऐसा शुरू हुआ। तब करने वाले कांग्रेस वाले थे, उसके बाद वो दूसरी पार्टियों ने पकड़ लिया, उसके बाद ये बीजेपी ने अपना लिया। ये ट्रेंड जो है, अगर ये यही रहेगा कि कोई पॉलिटिकल लीडर 100-200 लोगों को इकट्ठा कर दे, किसी के ऊपर हमला करा दे कोई, और आपको कोई पूछने वाला नहीं, तो यहां पे कोई भी सेफ नहीं है। मगर मैं जो बात अब कर रहा हूं, हम इस उम्मीद से लड़ रहे थे कभी ऐसा टाइम आएगा जब जिन्होंने कत्लेआम किया है उनकी सरकार नहीं रहेगी, दूसरी सरकार आएगी, तो वो अपना फर्ज समझेगी देश के कानून की तरफ, ना कि पीड़ितों की तरफ, कोई सिखों की तरफ। मेरे ख्याल वो तो उनको परवाह ही नहीं है। देश के कानून की तरफ अपना फर्ज समझेगी और कानून के मुताबिक उनको जो करना चाहिए वो करेंगे। मगर जब प्रेजेंट सरकार आई तो जिस तरह से इन्होंने करना शुरू किया, बहुत ज्यादा मायूसी हुई। वही कातिल जिनको पहले क्लीन चिट दी जाती थी ये कांग्रेस की सरकार में, तो हमारे पास कुछ पार्टीज थी जो कि पार्लियामेंट में जाके इशू उठाते थे, बड़े जोर से करते थे। वृंदा जी का बहुत बड़ा रोल है, मगर ये इशू आगे लग के अकाली दल और बीजेपी और उनके साथ बाकी पार्टियां लगती थी जो उठाते थे। 1 साल से मुझे ये लग रहा है कि ये सरकार में आके बैठ गए और इनके होते हुए ये जगदीश टाइटर को क्लीन चिट दी गई। इतना सबूत है उसके खिलाफ। जज ने 4 बार पूछा सरकारी वकील से कि ये जो उसने गवाहों को डराया धमकाया, इसके बारे में क्या कहते हो, मगर वो जो सरकारी वकील, सीबीआई का वकील, उसने कोई जवाब नहीं दिया और रादर यही कहता रहा कि टाइटल बेकसूर है। सज्जन कुमार का केस वहीं का कहीं पड़ा है। कई बार ये बात चली, बहुत लोगों ने ये कही, आज भी गुरप्रीत जी कह रहे थे, पहले कुलदीप नैयर जी ने भी ये बात कही थी कि हमें अब जैसे ये ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, उसकी तरफ चलना चाहिए। ये ट्रुथ रिकंसिलिएशन कमीशन का मतलब क्या है कि जो आके अब बता देंगे कि क्या हुआ, उनको आप माफ कर दोगे, कोई सजा नहीं होगी। मेरा ये विचार था कि हम का मतलब देश के नागरिक, पीड़ित और सिख कौम अभी इसके लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि उनको सजा हो, इसलिए ये लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों ने ये भी कहा, कई बार यही कहा गया
मेरे बारे में कि इसके पास तो कुछ और है ही नहीं, ये इशू लेके बैठा है अपनी पब्लिसिटी के लिए। बहुत से और भी एलिगेशन लगाए गए कि फीसों के लिए ये वो, और आपको मालूम है मैंने उन लोगों को चैलेंज किया कि 1 रुपया भी किसी से लिया तो साबित करके दिखा दो। मैंने कहा मैं वकालत तक छोड़ दूंगा अगर ये आप साबित करोगे। उसके बावजूद भी बहुत कुछ कहा गया। आज जो मैं आप लोगों से, क्योंकि यही वो, चाहे हमारा ग्रुप, चाहे हमारी गिनती बहुत कम है, मगर यही लोग हैं जो जहां पे बैठे हैं, जो इस लड़ाई को लेके चल रहे हैं 31 सालों से। तो इसके लिए गिनती नहीं मैटर करती। वो लोग जो इस लड़ाई को लेके 31 साल से चल रहे हैं, वो लोग बैठे हैं आज फिर मेरा वो फैसला करने का, वो विचार करने का टाइम आ गया है। इस लड़ाई को हमने कहां तक लेके जाना है? एक विचार ये है कि जब तक सजा नहीं मिलती हम लड़ते रहेंगे, जो मैं हमेशा कहता हूं। मगर ये मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है, मेरा विचार चाहे यही है। मगर आज सब बैठे हैं, सब ये विचार करो कि क्या सिख फोरम जिस लड़ाई को लेके 1984 दिसंबर से चली, वो लड़ाई को हमने उसी जज्बे से लेके आगे चलना है जितनी देर पीड़ितों को सजा नहीं मिलती, और उसी तरह से लड़ाई लड़नी है जहां हमने कोई तरीका बदलना है, हमने कोई दूसरा करना है, कैसे करना है। मैं आज चाहूंगा कि आज वाली मीटिंग में ये हम फैसला करके हटें, क्योंकि कभी कभी मेरे जो विचार हैं, मेरे अपने विचार हैं, जो ये सारे के सारे ग्रुप ये क्या चाहते हैं, इनकी तरफ से मुझे क्या आदेश है, मैंने क्या करना है, पहली बात। दूसरी बात, मैं अभी वृंदा जी से बात कर रहा था कि जब से ये सरकार आई है ना, ये जो लोग अकाली दल बीजेपी वाले आगे लग के पार्लियामेंट में उठाते थे ये इशू, टाइटल को पिछली बार 2009 में यूपीए की सरकार में क्लीन चिट मिली तो पार्लियामेंट उन्होंने हंगामा किया, पार्लियामेंट भी रोक दी, और सही रोकी क्योंकि गलत क्लीन चिट मिली थी। जब अब दिसंबर 2014 में दिसंबर में अब जे सीबीआई ने क्लीन चिट देके क्लोजर रिपोर्ट चुप चुपीते फाइल कर दी, पता भी नहीं किसी को लगने दिया, और उसके बाद पता भी लग गया तो ये बोले तक भी नहीं, पार्लियामेंट में इशू रेज भी नहीं हुआ। तो एक विचार हमारा ये था कि ये एक ऑल पार्टी ग्रुप हम बनाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो पहले पार्लियामेंट में इशू उठाने वाले, उभारने वाले, ये अब इसको उभारने में, उठाने में इंटरेस्टेड हैं। तो जो दूसरे लोग हमारा साथ देते रहे हैं, वृंदा जी ने हमेशा लीड लिया है, कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा हमारे साथ रही है, और भी बहुत से लोग, ये शरद यादव जी की पार्टी हमारे साथ रही है, मुलायम सिंह जी ने हमेशा साथ दिया, लालू प्रसाद जी ने साथ दिया। अब इन लोगों को इकट्ठे करके चलने की बात है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने वाली बात है। अगर हम ये फैसला करते हैं कि हमने लड़ते रहना है जितनी देर इंसाफ नहीं मिलता, और ये लड़ाई इसी तरह जारी रखनी है, तो बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि हम ये ऑल पार्टी ग्रुप बनाएं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वृंदा जी को कि वो इस ग्रुप को लीड करें। मैंने जो इस इशू को हमेशा प्रायोरिटी दी है, इसलिए प्रायोरिटी दी है कि मैं खुद, मुझे किसी ने ड्यूटी नहीं लगाई थी, अगर मैंने खुद ये अपने ऊपर लिया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको पूरी प्रायोरिटी देके, फर्स्ट अपनी प्रेफरेंसेस को देके इन केसेस को आगे बढ़ाऊं, आगे लेके जाऊं। मगर अब बहुत कुछ हो रहा है, शायद आपने अखबारों में पढ़ा ही हो कि अब
गुरुद्वारा कमेटी और अकाली दल अपने दूसरे सेट ऑफ लॉर्ड्स को खड़ा कर रहे हैं, और जिन लॉर्ड्स को खड़ा कर रहे हैं, जहां तो कोई सीनियर एडवोकेट लाके करें, उस दर्जे का लाके करें जैसे, तो भी बात बनती है। जिनको लाके खड़ा कर रहे हैं वो भी वो एडवोकेट्स को कर रहे हैं जो कि मेरे साथ बल्कि मुझे असिस्ट करते रहे हैं अभी तक। एडवोकेट चाहे काबिल हैं, इसकी में बात नहीं, मगर बात यह लड़ाई किनके साथ हम लड़ रहे हैं, तो उसके लिए लेवल क्या चाहिए। ये जिस तरीके से अब कोशिशें हो रही हैं कि कहीं ना कहीं इनको इस इशू को खुर्द पुर्द कर दिया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, इस तरह से किया जाए, वो कोशिशें अगर हमने लड़ना है तो हमें वो भी नाकाम करनी पड़ेगी। कातिलों के साथ तो लड़ना पड़ेगा, कातिल पार्टी के साथ भी लड़ना पड़ेगा, तो हमें लड़ना उनके भी साथ पड़ेगा जो हमारे दोस्त थे मगर आज वो कातिलों के साथ खड़े हैं। ये कुछ फैसले हमें करने होंगे। मेरा ख्याल है मेरे 10 मिनट पूरे हो गए। थैंक यू सो मच। और मैं वृंदा जी का तो खास करके, जहाँ पे जितने भी लोग हैं, राहुल बेदी जी जिन्होंने खुद त्रिलोकपुरी वाला सारा अपने ऊपर साहा देखा, और इन्होंने वो इतना हाईलाइट किया त्रिलोकपुरी का। अगर ये ना वहाँ पहुँचते तो शायद त्रिलोकपुरी की किलिंग कभी भी हमारी नॉलेज में आती नहीं। हरतोष बल जी लगातार इस 1984 के इशू पे लगातार ये लिखते रहे हैं। रविंद्र कौर जी ने बहुत रिसर्च की है। ये स्पीकर अभी आपको सभी अपने विचार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूं कि आज आप इस मसले पे कोई ना कोई फैसला करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। शुक्रिया फुल्का साहब। फुल्का साहब ने कहा पार्टियां, तो पार्टियों का तो आजकल एक बड़ा सिंपल है। फुल्का साहब, पार्टियों का तो बड़ा सिंपल है ना कि तुमने किया था इसलिए हमने किया इसलिए तुम कर लेना। यही चल रहा है ना आजकल के, आप कब थे, आप कहाँ थे। एनी हाउ, क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड है। फुल्का साहब ने वृंदा जी को कुछ असाइन किया है, सो इट्स इनअप्रोप्रिएट दैट आई कॉल हर। जो आप में से शायद नहीं जानते कुछ लोग, वृंदा जी मेरी कंटेम्परेरी हैं। फुल्का साहब थोड़े कम थे, बट वी वर इन आवर 30s व्हेन ऑल दिस हैपेंड। एंड शायद आप लोगों में से कुछ लोग जानते हो, वृंदा जी के पास चॉइस थी फिल्म की हीरोइन बनने की, बट शी टुक ए स्टैंड इन दोज डेज दैट शी हैज टू वर्क फॉर चेंज ऑफ दिस सिस्टम इन दिस कंट्री। हम सब उन दिनों में, हम इंडिपेंडेंट मार्क्सिस्ट थे। शी ज्वाइंड ए मार्क्सिस्ट पार्टी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट फ्रॉम दोज डेज। मैं 70s की बात कर रहा हूँ, नॉट 80s की। दैट आई एम सेइंग 70s, when she was a student, immediately after her student days, she joined service for some years, but after that she joined active politics to change the system as through a revolutionary method, then through parliamentary method, and she has been continuing for that both outside and inside parliament. These are the commitments of those people who are honestly for the change of the system, for justice, not in politics, for certain immediate gains, maybe that of social power, economic power, or pure and simple political power. And with that, I request Vrinda, please, to have you. I'm your contemporary, don't mind. I was in Delhi University, student, taught everything. थैंक यू डॉक्टर नारंग। पता नहीं आपने मेरे अतीत की कौन कौन सी कहानियाँ ढूंढ के आज यहाँ रखा था। खैर, जनरल चड्डा जी और हमारे साथी जो अभी सब बोलने वाले हैं और प्रिय साथियों, मैं सिख फोरम को अपनी दिल से मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि न्याय के लिए जो संघर्ष है, 1984 की जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं, 1984 के बाद जो तमाम मुद्दे उठ खड़े हुए, जुडिशरी का रोल, पुलिस का रोल, पॉलिटिशियंस का रोल, स्टेट का रोल,
वो तमाम सवालों को, संघर्ष को जोड़कर आपने लगातार न्याय की आवाज़ को उठाई। मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि हमने देखा अपने अनुभव से, जो भी मेरा सीमित अनुभव है, कि often the struggle for justice is a very lonely struggle. और कभी कभी बहुत हताश भी होने के ऐसे पल आ जाते हैं उस संघर्ष में, और इंडिविजुअली भी उस संघर्षों का एक बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जब संगठित होकर 1984 में आपने सिख फोरम को खड़ा किया, और उसके बाद भी तमाम अप्स एंड डाउन्स के बीच में आप लगातार इस फोरम को जिंदा सिर्फ नहीं रखे, लेकिन आपने लोगों की मदद भी की, न्याय का संघर्ष भी लड़े, और एक मैसेज भी दिया पूरे समाज को कि हमारी संघर्ष केवल हेडलाइंस तक सीमित नहीं है, हम लगातार न्याय के लिए, दिलाने के लिए और लड़ने के लिए हम मौजूद हैं। तो मैं समझती हूँ हम लोग सब जो इस लड़ाई में कहीं ना कहीं शामिल है, आपने हमें प्रेरणा दी है, और उसके लिए भी मैं आज यहाँ खड़ी होकर आपको बधाई देना चाहती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस संघर्ष में जैसे सिख कम्युनिटी कभी भी अकेले नहीं थे, दिल्ली में भी और देश के अन्य जगह में भी जो भी जनवाद पसंद लोग हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं, जो इंसानियत को समझते हैं, सब ने उस 1984 की जेनोसाइड के खिलाफ आवाज़ सिर्फ नहीं, लेकिन उस संघर्ष में अपने को जोड़कर, उस संघर्ष का एक हिस्सा अपने को मानकर आगे बढ़े हैं। तो ये जो आपके फोरम का स्पिरिट है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके फाउंडर्स, अभी वो बता रहे थे डॉक्टर महिपाल सिंह के अभी निधन के बाद भी उस स्पिरिट को आप लोग जिंदा रखेंगे, यही मैं उम्मीद करती हूँ। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं और मेरी पार्टी इस संघर्ष में शामिल है आपके साथ। अब वो रोल क्या हो सकता है, कौन सी समय पर क्या रोल कोई पॉलिटिकल पार्टी या मेरे जैसे व्यक्ति अदा कर सकते हैं, ये तो हमें एक सामूहिक समझ बनाकर ही तय करना पड़ेगा। एक बात है, मैंने जो देखा है कि इसके अलग अलग पहलू हैं। अभी फुल्का जी ने एक पहलू की पूरे कमांडर के रूप में संभाला है, और इनके लिए जितनी इज्जत है वो कम है, क्योंकि जिस रूप में लगातार उन्होंने लीगल रूप का संघर्ष लड़े हैं, और न्याय दिलाने के लिए जो कोर्ट्स में जो बड़ा संघर्ष था, जो दबाव था, केवल लीगल नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप में भी एक बहुत ज़बरदस्त दबाव आता है, उसके लिए भी वो खड़े रहे हैं। पॉलिटिकली मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि 1984 में जब हम लोग सब उस काम में शामिल हो गए, जो रिलीफ के रूप में, वो शब्द इस्तेमाल हमें अच्छा पसंद नहीं होता है, लेकिन जो भी है उस एकजुटता के रूप में जो हम लोगों ने उस समय काम किया, और उसके बाद जो हमारे संपर्क उन विक्टिम परिवारों के साथ हुआ, और हमने देखा जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी दिल में भी एक खौफ ज़रूर रही है, एक डर ज़रूर रहता है, और वो डर तब निकल सकता है जब ये तय होता है किसी समाज में, किसी सत्ता के द्वारा, कि जस्टिस, नोबडी इज अबव जस्टिस। लेकिन 1984 की जो पूरी प्रक्रिया रही है, विक्टिम फैमिलीज के साथ जो सबसे ज़बरदस्त धोखा दिया है, और इसलिए आज पीढ़ी दर पीढ़ी के दिल में वही एक सवाल है कि हमारी ज़िंदगी अधूरा है, जितने भी हम मदद करते हैं, लेकिन ज़िंदगी अधूरा है जब हमारे माँ, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे नाना, हमारे नानी, दादा या दादी या परिवार की किसी भी सदस्य की हत्या के हत्यारे आज भी घूम रहे हैं छाती पीट कर कि हम हैं और हम ही रहेंगे। तो निश्चित रूप पर उन परिवारों के ऊपर जो एक डीमोरलाइजेशन होता है, वो केवल परिवार तक सीमित नहीं, इट इज़ अ मच वाइडर सोशल इम्पैक्ट। एंड आई थिंक that is one of the most important aspects which political parties are not dealing with.
एंड इट हैपन्स। कुछ सिंबल्स होते हैं किसी भी कम्युनिटी। आखिर ये बात सही है जो जनरल अरोड़ा ने कहा कि हम इंडियन हैं, हम लोग सब इंडियन हैं, और इंडियन होने के हमारे आइडेंटिटीज के साथ हम इंडियन हैं। तो हमारी जो आइडेंटिटीज है, कोई भी आइडेंटिटी हो, अगर उस पर उस आइडेंटिटी के रूप में सबसे बड़ा जबरदस्त हमला होता है, तो फिर जो हमारी साइकी पर, हमारी कम्युनिटी पर जो घाव बनता है, that has a much deeper impact on democracy and democratic aspirations in a society. तो आज हम कह सकते हैं सब कुछ नॉर्मल है या जो भी है किसी भी जगह पर। अब कभी कश्मीर की अगर हम बात सोचते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ अभी वैली में शांति है, तो वो जो बुनियादी बातें हैं कश्मीरियों के लिए, कश्मीरियत की बचाने की जो लड़ाई है, उसको फिर हम पीछे छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि अभी तो सब नॉर्मल है, उसको भूल जाते हैं। अभी लोग सोचते हैं कि पंजाब अभी सब ठीक है, तो अभी हम ये सब छोड़ सकते हैं। तो जो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस है किसी भी घटना की अगर हम देखें, तो हमारी जो सत्ता रही है हिंदुस्तान में, शुरू से उन्होंने हमेशा शॉर्टकट रास्ते ढूंढे हैं, और शॉर्टकट रास्ते हर चीज को इस रूप में देखे हैं कि भाई अभी शांति हो गया, अब नॉर्मलाइजेशन हो गया, आगे बढ़ो। आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो लोगों की घाव, लोगों की पीड़ा, लोगों की खून, लोगों की दुख, लोगों की दर्द, लोगों की शोषण के आधारित है। तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये डेमोक्रेसी के ऊपर, डेमोक्रेटिक थिंकिंग के ऊपर, ये केवल एक केस या 3000 लोगों के केस का सवाल नहीं है, ये तो है ही ये सवाल। लेकिन उसके साथ साथ जो पूरे डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस और यानी कि हम एक डिग्निटी के साथ जिए, और वो तब हो सकता है जब ये आघात हुआ है, जो एक जबरदस्त हमला हुआ है एक पूरे कम्युनिटी के रूप में, उसको हम डील करें, उसको नजरअंदाज करके हम नहीं सोचते कि हम आगे बढ़ सकते। मैंने देखा, अभी मैं उड़ीसा में गई थी, कंधमाल का आप लोगों ने सुना है, वहाँ क्रिश्चियंस के साथ वहाँ 100 लोगों की ऑफिशियली बोलते हैं कि उन दंगों में 100 लोग मारे गए, लेकिन उनके हिसाब से इससे बहुत ज़्यादा हुआ। 56,000 लोग डिस्प्लेस्ड हुए। मैं 7 साल के बाद उन्होंने हमें बुलाया, मैं वहाँ गई और हमने देखा वही एग्जैक्टली जो 1984 के साथ, जो केसेस के साथ हुआ, जो इन्वेस्टिगेशंस क्लोज हुए, जो पुलिस ऑफिसर्स को प्रमोशन मिला, जो पॉलिटिशियंस को मंत्री पद दिए गए। तो ये बात फुल्का जी की सही है कि 1984 को अगर हम लोग पकड़ के अगर हम उस समय कामयाब होते, तो शायद दूसरे केसेस में भी एक प्रेसिडेंट होता। तो मेरा मेन पॉइंट जो है कि दिस इज अ डीपर इश्यू ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और पॉलिटिकल पार्टीज अनफॉर्चुनेटली उस रूप में नहीं देखते हैं। अभी तो एक फुटबॉल बन गया 1984 दंगे और गुजरात के 2002 की जेनोसाइड। कांग्रेस कहते हैं कि 2002 की जेनोसाइड, तो बीजेपी जवाब देती है कि 1984 में क्या हुआ। तो 1984 कभी 2002 को जस्टिफाई नहीं कर सकता है, और 2002 का जेनोसाइड के आधार पर हम कभी 1984 को भूल नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स के आधार पर पूरा जो डेमोक्रेसी की जो एक नियमित जो एक गारंटी होनी चाहिए वो नहीं है। तो इसलिए फुल्का जी की जो ये सुझाव है बहुत दिल से और बहुत मतलब वेल इंटेंशन सुझाव है कि ऑल पार्टी कुछ बने और ये सब करें, लेकिन फुल्का जी ये होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मामला बहुत पॉलिटिकल हो गया है। और अगर हम सोचें कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो इसको अपनी पॉलिटिक्स में एक हथियार बनाकर कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं होगा। लेकिन बाकी
जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो पार्टीज हैं, जो इसको ले सकते हैं, हाँ निश्चित रूप पर उनके साथ बातचीत करके हम कैसे 1984 की न्याय के लिए किस रूप में हम वो संघर्ष कर सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर विचार किया जा सकता है। और जो भी हमारी तरफ से जो मदद या जो भी कदम उसमें हो सकता है, आप जानते हैं मैं हमेशा उसके लिए तैयार हूँ। तीसरी जो मैं बहुत संक्षिप्त में बात रखना चाहती हूँ वो है महिलाओं की बात। और हमने देखा ये तमाम दंगों में जो महिलाओं के साथ होता है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं दादरी गई थी। ये बात ज़्यादा प्रकाशित नहीं हुआ है क्योंकि जो महिला इन्वॉल्व है वो स्वयं उसको ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें बताया जब मैं वहाँ गई थी और हमारे साथियों के साथ, कि जब ये गुंडे लोग, ये अपराधी घर के अंदर घुसे थे तो जो महिलाएं थी उनमें से एक महिला को पकड़ के उनके साथ बहुत बुरी तरह बदतमीजी के साथ यौन अब्यूज किया, एक बहुत ब्रूटली किया। अब वो बात छिप गई है। 2002 में जो महिलाओं के साथ रेप हुआ छिप गई, और 1984 में जो महिलाओं के साथ हुआ, जो रेप्स हुए, जो सेक्सुअल असॉल्ट्स हुए, जो केसेस रजिस्टर्ड नहीं हुए, जो महिलाएं बोल नहीं सके, क्या ट्रॉमा है, क्या पीड़ा है, ये समाज को बिल्कुल अगर पता भी है तो परवाह है कि नहीं मैं नहीं कह सकती हूं। तो इस पूरे संघर्ष में जो महिलाओं की आवाज है और उनका जो पीड़ा है, विधवा के रूप में, हाँ, एक बेटी जिसने अपने पिता को हारा, हाँ, लेकिन एक औरत के रूप में उस दंगे में जो उनके साथ हुआ, उसका कोई एक भी केस का, इवन है कि नहीं फुल्का जी, रेप के केस में एक भी केस में वो नहीं हुआ। हालांकि एफआईआर रजिस्टर हुए नहीं, लेकिन एफआईआर रजिस्टर हुए। गैंग रेप्स की एक तो मैं जानती हूं, एक गैंग रेप का, त्रिलोकपुरी का गैंग रेप का, त्रिलोकपुरी ने, मनोज मिट्टा ने भी कुछ केसेस को रजिस्टर किया था, कुछ एफआईआर्स लगे थे, लेकिन देयर इज टोटल साइलेंस फ्रॉम ऑल साइड्स ऑन दैट। मैं कह नहीं सकती हूं शायद जो विक्टिम्स हैं उनकी क्या इसमें सोच है, नेचुरली वही सेंटर में हमें रखकर ही कदम उठाना चाहिए, लेकिन ये भी है। और आखिर में मैं समझती हूँ कि जो स्टेट की अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, जो पुलिस को सजा देने की जो सवाल है, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज ने सबको एक साथ पूरा एग्जोनरेट किया है, उसकी लड़ाई तो लड़ी जा रही है, लेकिन आगे के लिए भी हमें सोचने की जरूरत है। हमें कौन से अकाउंटेबिलिटी के कानून की जरूरत है। अभी आज तक कम्युनल वायलेंस के खिलाफ हमारे देश में कोई कानून नहीं बना। हेट स्पीच के लिए आज कोई ठोस कानून नहीं है। हेट लिटरेचर के लिए आज कोई ठोस कानून नहीं है। अगर हम कहें कि ये देश केवल हिंदुओं के लिए है और बाकी सब अपने अपने देश में चले जाएं, तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि हम ऐसे भाषा को रोके, क्योंकि उस भाषा के आधार पर जो प्रोवोकेशंस होते हैं पूरे एक फौज को, जो उसको एक सिग्नल के रूप में मानकर उस पर एक्शन लेते, केवल कोई एकेडमिक डिबेट नहीं है, ये हो रहा है और ये होगा। मैं नहीं मानती हूं कि कानूनी सब कुछ है हमारे देश में, नहीं, नागरिक है सब कुछ, नागरिकों की चेतना सब कुछ है, नागरिकों की संगठन सब कुछ है, नागरिकों की रेजिस्टेंस सब कुछ है, वो है इस देश की भविष्य। लेकिन साथ साथ वो भी मजबूत होगा अगर हमारे पास एक ऐसे सख्त कानून हो। तो जहाँ हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ते हैं वो भी हमें करने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में अगर पार्लियामेंट चलती है तो ये मैं गारंटी कर सकती हूँ कि हमारे सांसदों की तरफ से
ये मुद्दे निश्चित रूप पर 1984 के न्याय के मुद्दे निश्चित रूप पर हमारे साथी के द्वारा और अन्य साथियों को भी हम उसमें जोड़ेंगे, हम लोग ज़रूर उठाएंगे। थैंक यू। Thank you, Brinda. Brinda, we have never accepted that it's a fight of six. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये लड़ाई सबकी है। इनफैक्ट 84 का जो इशू था सबसे पहले नॉन-6 ने उठाया था, जस्टिस सीकरी, जस्टिस तारकुंडे, PUCL, PUDR, and you've been knowing that the very first meeting which was held within 1 week of this carnage in Delhi University was organized by our leftist friends, Kumarish, Zuhur, and only myself and another, our colleague Gyan Singh Sandhu. 2 of us were 6 speakers, all others were non-6 speakers. So this issue has been a human rights issue, the question of democratic rights, rule of law, and thank you very much for bringing that to highlight, and thank you for the assurance that you have given that your party, your colleagues, they have been doing it all the time. So still another reassurance is welcome. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ 2 ਸਪੀਕਰਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਰਿੰਦਾ ਜੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ। ਰਾਹੁਲ ਔਰ ਮਨੋਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੀਡਰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਜਸਟ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਟਾਈਮਸ, BBC ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਾਹੁਲ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂ 10 ਮਿੰਟਸ ਫਰੋਮ wherever you like. Please welcome. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਈ ਹਿੰਦੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਪੀਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਨ ਪਿੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ 1984 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਚਸ਼ਮੇ ਗਵਾਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, I don't want to go into that because it's been regurgitated. बहुत बार ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਜਾਂ 9 ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ? 11 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। 11 Now it's the 11th. ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ ਵੀ ਡਿਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ 1992 ਦੀਆਂ ਬੰਬੇ 'ਚ ਜਾਂ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦੰਗਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਫਸਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ is frightening and I would say abysmal, because ਜੋ ਸਾਡੀ law and order machinery ਹੈ, that has completely broken down. There is no accountability, it is communalized, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ capability ਵੀ ਹੈਗੀ or to control has been taken away by the politicians. Secondly, as Mr. Phulka said, ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸਕੈਪਟੀਕਲ, ਸੌਰੀ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸਕੈਪਟੀਕਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਗੈਟਸ। I don't think it's going to get any better. I don't think we will, I hope that Mr. Jagdish Titler does go behind bars, but it's already been 31 years
And I am very skeptical as to whether that is actually going to take place or not. Secondly, I was unfortunate or fortunate enough journalistically to also cover the 2002 riots in Gujarat. और जो मैं गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, it was really a more polished surgical version of what took place in 1984. ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ modus operandi was repeated in Gujarat in 2002. Army deployment, for example. ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 2 ਤਰੀਕ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ for deployment or even shoot on site. Same problem in Gujarat. ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਨੀ ਸੀ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ nobody knows. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ state accountability factors ਹੈਗੇ I don't think they are going to improve with the politics that we are seeing today. If anything, as Brinda mentioned about Dadri, I think it's only going to get a lot worse. What the solution is, I am not capable or competent enough to give a solution, but I think it's going to get a lot worse in the coming years. ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ 84 ਦੀ ਹੈ ਜੀ, the essence of 84 or the lesson of 84, I think, has not really been absorbed by the politicians, because this is the first time where the state participated and organized what I would call a pogrom, a very sophisticated pogrom. And as Brinda said, jo ye competition chalda hai ki my riot was bigger than yours, the 2002 riot was not as big as the 1984 riots, I think is infructuous and is specious reasoning. So the upshot, I won't take my 10 minutes, sir, because I am not much of a speaker. I'm more of a journalist. But the upshot of it is that I think we should, as Mr. Phulka, I salute Mr. Phulka, because for the last 30 years, he has been pursuing this case with a very doggedly, और इन्हां नूं सलूट करना चाहिए कि जो इन्हां ने कोशिश की है वो इत्थों तक लिया ही नहीं, और I wish him the very best to bring these people to justice, but I don't think there is going to be much justice that is going to accrue from this, और इद्दां ही गल चलती रहेगी. And I think with the sparse audience that there is, I think public interest too is dying down. So that with these words, I leave you, but with the memory that what happened 31 years ago was the first instance where the state was the aggressor. And ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ the state will continue to be the aggressor, and the politics that is unfolding ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, it is going to get, I think, a lot worse, and that is the only certainty about our politics. So with these words, I leave you, sir. Thank you. Thank you, Rahul. Right you are, but still civil society has to remain alive. At least if justice is not done with others, it should not happen again. ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, late your friend Asghar Ali engineer, Ram, Imtiaz Ahmed, myself, we have been visiting various police academies to sensitize policemen about minorities, and our interaction with policemen have shown that their mindset is clearly against minorities. How far we can change, I don't know. We have been to various police academies. BPRD started a program and we were sent to various police academies, but you're absolutely right. The policeman's mindset is against that. Anyhow, with that, now we have with us Harminder Kaur, जो एक एक्टिविस्ट, राइटर, जिन्हों ने बहुत कुछ लिखा है, किताब लिखी है, ब्लू स्टार ते बहुत कुछ काम किया है,
और सब तो अच्छी गल जिहड़ी ये है कि lately she has been actively associated with Sikh Forum, and we are looking forward towards her association with Sikh Forum also in a very big way, with her background, with her, and this volume which you are seeing today, we are grateful to her. She has edited this finally. So with that, Harvinder, thank you very much for that. Good evening, ladies and gentlemen. मैं बहुत सारी गल्लां जेडी करना चाह रही सी फूलका साहब और बृंदा जी ने ऑलरेडी कवर कर देते हैं, so I will not go over them. I would just like to highlight 1 or 2 points. Is there any law, Brinda ji, for ethical degradation of politics? Very good question. How would you justify the Congress officially propping up a person like Bhindranwale to vanquish the moderate force of politics in Punjab, the Akali Dal? How would you justify arming the man? How would you justify the party using him as its campaign person? At least there are 2 examples. He campaigned vigorously for R.L. Bhatia and Sukhbans Kaur Bhinder during the 1980 elections. To what extent can political parties go in a democracy to support this kind of politics and then leave the burden to bear on the common people? The second point I would like to raise is what happens when a person no less than Prime Minister of the country protects people who are involved in the genocide. And I would like to quote here a very important person who has worked with Rajiv Gandhi, who was the DGP of Punjab during the years of militancy, Julio F. Ribeiro. उन्होंने अपनी किताब बुलेट फॉर बुलेट, एंड बाय द वे उन्हों का काफ़ी क्रिटिसिज्म होया जब उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी बुलेट फॉर बुलेट, बट उन्हों का कहना है कि ये बुलेट फॉर बुलेट मैं नहीं इन्वेंट किया, ये अरुण नेहरू ने मेरे कंधियां तो तीर चला के इस्तेमाल किया. He has said this in his book. And I'd like to quote from his book. He says, and I quote, "I was the only officer at certain meetings with the Prime Minister to advocate the prosecution of politicians accused of inciting the mobs to kill the Sikhs in Delhi. After I had repeated my view a 3rd time, Governor Ray advised me not to voice this sentiment again in the presence of the Prime Minister. However, I was not one to stay silent when convinced that a grave injustice was being done. And on one occasion, he says, I took advantage of Governor Ray's absence during a meeting to raise the issue of the Delhi riots and killings again with the Prime Minister, Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi lost his temper. He had never lost his temper with me, he emphasizes. He said he could not agree to prosecute Sajjan Kumar, a committed Congress loyalist, merely because of some fake allegations being made against him. He said that Sajjan was present beside the body of his mother throughout the time it lay in state. He was himself a witness to this fact. What can be done, Brinda ji,
in a parliamentary democracy where the Prime Minister is himself protecting somebody who has instigated riots or genocide or pogrom, whatever you like, and is being protected at that level, do you think systems exist in this country whereby justice can prevail? But nonetheless, I would say for the next generation, continue this battle until the systems change in this country and until you are able to get justice. Thank you. थैंक यू हरमिंदर ਹੁਣ ਤਾਂ ओपन सीक्रेट है सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं की गई जब बड़ा पेड़ गिरता है तो ज़मीन हिलाई भी गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा तो इट्स ओपन सीक्रेट नाउ एनी हाउ वी हैव विद अस हरतोष बल हरतोष जी साडे नाल अगे भी एक दफ़ा आए सी और उन्होंने काफ़ी कुछ सीक्रेट जिहड़ियां उन्हां दिनां दी गल्लां सी ही शेयर्ड विद अस हरतोष इज़ आल्सो ए वेरी सीनियर जर्नलिस्ट ही हैज़ वर्कड विद पेपर्स लाइक Indian Express. Presently, he is the political editor with Kerma. And in fact, because Kerma we used to read during our student days, so he has bring it back to a level where it is now well, and particularly it is available also on internet. I get that copy on there itself. And Hartosh these days is also very well seen on various channels on TV as political commentator. And he speaks his mind wherever it is required without any fear or apprehensions. So, Hartosh, you have your 10 minutes, please. Thank you. मैं इत्थे बैठे गल करना हाँ जी आवाज़ क्लीयर है जी हाँ बहुत मैं भी एज राहुल ने कहा सीगा कुछ पंजाबी बट मोस्टली इंग्लिश में गल करांगा इंग्लिश हो जाएगी तो मेरा इंटरस्ट हैगा जी ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ 84 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 84 ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 84 ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਫॉर मी 84 ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ मैं गल नहीं कर रहा फूलका साहब की या दिल्ली च बैठे सिखा की पर मैं गल कर रहा हैगा ओवरऑल कम्यूनिटी की कित्थे कमी रह गई हैगी इस साल 2 किताबां आईयां ने 84 बारे एक संजय सूरी की किताब सीगी विच डॉक्यूमेंट्स कमलनाथ's रोल इन ग्रेट डिटेल संजय सूरी वॉज एन आई विटनेस वेयर कमलनाथ एट गुरुद्वारा रकाबगंज जिथे 2 बंदे साड़े गए सीगे कमलनाथ मॉब लीड कर रहा सीगा ਇਹ ਟੈਸਟਮਨੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹਨੇ ਵੀ 84 ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਨੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 84 ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਊਗਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਬੜੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ 84 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 84 ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਕਮਿਊਨਲ ਰਾਈਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 84 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਮਿਊਨਲ ਰਾਈਟਸ ਜਸਟਿਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ 84 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ
ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜੋ ਵੀ ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਪੈਟਰੇਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 84 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 84 ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਦੇ ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ, ਬੰਬੇ ਹੋਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਏ, ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, 2002 ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਕ ਆਫ ਐਫਰਟ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 97 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਕੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਈਅਰਸ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਲ ਹਾਰਟedly ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ 84 ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬਟ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੈਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਆਈ ਕੈਨ ਚੈਲੰਜ ਯੂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਰੂਲਿੰਗ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵੇ ਕਿ 84 ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 2002 ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਆਈ ਮੀਨ ਅਗਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਲੜਾਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਲਈ ਲੜੀ ਸੀਗੀ। 2002 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟਸ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟਸ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਐਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਹਨੇ ਜਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਕੇਸ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚਰ ਆਫ ਤਿਰਲੋਕਪੁਰੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਉਹਨੇ 98 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 84 ਨਹੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ 2002 ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਟਰੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ देयर ਓਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਇਟ। ਰੋਸ਼ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਤੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਰੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸਨੇ ਸਾੜੇ ਹੈਗੇ। ਡੇਰਾ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ
ਇੱਕ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਰੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਗੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਟਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਟਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ 84 ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਲਿਮਿਟਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਟ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਿੱਖ ਅਫੇਅਰਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ। 5 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਵ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ मंच ते बैठे मेरे बुजुर्ग सज्जनों ते सामने हॉल च बैठे साथियों, फतेह की प्रवानगी करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैनू बड़ी खुशी हुई जदों मैं सुनिया कि जी भैन जी मेरे इन्होंने ब्लू दरबार साहब के हमले उत्ते कुछ लिखा सीगा, क्योंकि जिहड़ी गल दुखांत दी हैगा, जिद्दां मेरे वीर हरतोष ने गल की है कि असी ना इन्हां दे सिखां दी गल की कि असी दूजे माइनॉरिटीज़ नाल नहीं असी इकट्ठे हो रहे, असी आप दे नाल ही नहीं इकट्ठे हो रहे। अज असी डिस्कस कर रहे हैं, आई एम सॉरी, हरविंदर भाजी ने एक साइकिल रैली कड्ढी सीगी फ्यू मंथ्स अगो, अही 84 दे प्रोग्राम दे उत्ते नवंबर दे, एंड वो सोशल मीडिया उत्ते आई सीगी ते मैं उहदे ते एक कमेंट कीता सीगा कि प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन जून 84। वो भी एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टैररिज्म सीगा, बट असी लोग उन्होंने भुल गए हाँ। असी हुण इदां लगदा है कि असी उन्होंने स्वीकार कर गए कि जी वो साडे ते होना ही सीगा, जबकि रजिंदर पुरी वर्गिया ने अपने लेख लिख के चला गया है कि वो बेचारा वो अगे तुर गया है कि जी मैं जदों मिलिया भिंडरां वाले नूं 1 महीना पहला दरबार साहब के हमले ते वो सारी सरकार की गल मन गया सीगा, इसलिए सरकार का कोई हक नहीं बनता सीगा दरबार साहब के उत्ते हमला करने का। ये सारे लेख साडे कोल मौजूद ने, मगर असी उस चीज़ को भुल गए हाँ। अज दिल्ली ते बैठे सिख सिर्फ नवंबर 84 नूं याद करते हैं, पंजाब च बैठे सिख दरबार साहब के हमले नूं याद करते हैं। असी इकट्ठे नहीं हो रहे तो तां ही असी छित्तर भी खावांगे तो अगे नूं भी खांदे रहांगे। सो मेरा कहण दा भाव हैगा कि असी इस चीज़ नूं आइसोलेशन च ना लईए। वैन वी टॉक अबाउट जिहड़ी गल कीती सरबत खालसे दी, मेरे वीर अपने कंवर संधू ने एक वधिया आर्टिकल पिछे लिखा है कि सिख उत्थे इकट्ठा होया सीगा पंजाब, ठीक है रोष हैगा, एक तो सीगा जिहड़ा बेअदबी हुई सीगी गुरु ग्रंथ साहब जी दे उत्ते, दूजी गल है कि जिहड़ा 31 साल दा सानू इनजस्टिस सिख कौम नूं सहना पिया है। मैं तो कहंदा 31 साल तो बहुत पहलां दी भी गल है, बट 31 साल तो साडे सामने ही है ना, उस तो पहलां भी सिख इनजस्टिस सहंदे रहे ने। बट सिख नूं जिहड़ा 31 साल का इनजस्टिस, जिहड़ा मिस गवर्नेंस, जिहड़े मेरे वीर ने गल कीती है कि पंजाब दे विच जिहड़ी मिस गवर्नेंस है, ये सारी चीज़ उभर के इन्हां ने पिंडां दे लोकां नूं बाहर कढिया। नॉट एट मान's कॉल, मान माइट हैव बीन ए स्मॉल गाय हू जस्ट गिव अ कॉल कि जी असीं सरबत खालसा करना, ही वांटेड टू प्लेस पॉलिटिक्स। मैं मान नूं मिल के आया 5 तरीक नूं, फतेहगढ़ साहब ने सानूं बुलाया सीगा, उन्होंने मैं बेनती की सीगी इहनूं सरबत खालसा दा। मेरे वीर इत्थे बैठे ने चरणजीत सिंह जी, ये भी नाल सीगे साडे, चंडीगढ़ आए सीगे। असीं कॉन्फ्रेंस की सी केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा 27 अक्तूबर नूं, ते असीं कहा सीगा कि भी इहनूं सरबत खालसा दा खिताब ना दिओ। सरबत खालसा दी जिहड़ी पवित्रता है, उहदी जिहड़ी महानता है, उहनूं छोटा ना बनाओ। लेट इट बी ए process for summoning a Sarbat Khalsa. So while that process has started, I am very glad that process has started today.
the Sikh worldwide has started thinking of again reviving this beautiful institution of the Sarbat Khalsa. And we are all working diligently towards creating a structure for a Sarbat Khalsa. It is not a simple thing. After all, we must realize कि Sarbat Khalsa पिछले 200 सालां तो ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ is not ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੇਤਾ ਜੀ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ we have to make a structure. We are all working towards it. I would request everybody who has any contribution to give, please join hands. Let's work towards the structure towards Sarbat Khalsa so that Sikh issues can be dealt with in totality and not in isolation. Like, I'm sorry it is happening today here. We are talking only about November 84. There are lots of issues. There are lots of other problems that the Sikh community faces. Let us discuss them all in totality. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਸਟਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ he said truth and reconciliation commission. Yeah, truth, and I do not know the legality of it all, but what happened in South Africa, at least we will get to know. Today the people are denying that we did anything also. I remember Chidambaram came once and I think there's one guy in Delhi also who calls himself Kendriya Singh Sabha or something, some ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ it's high time the Sikhs forget and forgive. And we commented to that, we are willing to forgive. Please tell us whom. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. But the problem remains is that let us all come together and let us not meet once in 6 months or once in a year in meetings like this. Like my friend says, you can see the diminishing attendance here. Maybe after another 2 years, you will find fewer people here because then as time passes, people start accepting things. Let us not forget, we will never forget what happened in 84, whether June of 84, November of 84 and otherwise. Let us not forget that, but let us sit together and work together. ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ. ਹਿਸਟਰੀ ਸੇਜ਼ ਇਟ. ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. While okay, we live in a democracy, I do not know how progressive democracy we can call this, because we know that justice is denied. It is being denied for the last 31 years. It might be denied, like we all agree, maybe for the next 31 years. I do not know whether this fight. Hats off to Harvinder ji, who has assiduously worked towards it. Continue to work towards it. I wish him all success. But again, like my other friends say, I have my doubts ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ. 31 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਹੋਰ 31 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ. ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ. ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ. You have all done well in your respective fields. Please come together, spare some time for your community, meet other organizations. Youngsters are here, group of concerned Sikh is here, others are here. Meet together, become a force. Don't become, मैं Sikh forum ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ group of concerned Sikhs ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੂਮੇਗੀ. And I firmly believe this because ਗੁਰੂ ਜਦ ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਓ. ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ. ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ. ਪਹਿਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਨੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ. ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਜੂਨ ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਦੋਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀਲੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ. ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀਲੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ. ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਕਿ ਟਿਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਰ ਦੇਅਰ these 2 meetings will be held. So for us, June 84 is more important than November 84. Of course, here human beings died, but that was right attack on our identity, our existence itself. So there is no doubt about that ਕਿ June 84 ਨੂੰ
ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਜਾਣਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਲ ਦੋਸ we can discuss all those things, and if you have given a call to the youngsters and I join you in that कि younger generation ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, because I am a student of minorities, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ as younger what we missed, where our roots at that time we realize. Anyhow, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਥਿੰਗ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹਾ ਔਨ ਸਰਟਨ ਅਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਸਕਸ ਆਲ ਦਿਸ ਸਟਫ ਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। So with that, I will request the President to conclude this session in about 5 minutes, and then the Secretary, Dr. Pratap Singh Ji, can vote a proposal. परम सत्कारयोग साध संगत, distinguished speakers, आप सारे अज इत्थे तशरीफ लियाए, ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ। ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕਈਆਂ ਨਈ ਐਂਗਲਸ ਨਿਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, human rights and national integration. We work within the nation, in the Indian nation itself. This body is apolitical. We have not sought any political gains from this platform or permitted anybody to take any political advantage for himself. मैं grateful हाँ साढ़े जोड़े founders सन उन्होंने इतने अच्छे नियम रखे तो आज ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। Neither we have got involved in any external conflict. We've been always expressing our views most honestly, sincerely and in a very forthright manner. मैं इस चीज़ का ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਡ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟਿਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਦ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਅਬਰੋਡ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਨ ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਟਸੈਲਫ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਸੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇ ਗਿਵ ਅਸ ਡਿਊ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ ਆਵਰ ਵਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਮਸਟ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਫਾਰ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ ਫਾਰ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਟੂ ਰੈਂਡਰ ਦਿਸ ਸੇਵਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਨੌਲੇਜੇਬਲ, ਵੈਰੀ ਹਾਈਲੀ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਪਰਸਨਲ ਆਨ ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਔਰ ਕੰਸਰਨ ਸਿੱਖਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਊ ਕਰਨ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਈਡ ਸਟੈਪ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ। ਨੂੰ ਐਸ ਫਾਰ 84 ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਲਸੋ ਗਾਟ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 84 ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਫॉरगेट ਇਟ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰੀਡ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੈਨ ਫॉरगिव, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
कभी भी भूल नहीं सकते, उन्होंने हमेशा से याद रखेंगे। साड़ी कोई भावना नहीं कि किसी कम्युनिटी नाल किसी तो बदला लिया जाए, साड़ी कोई बदले की भावना नहीं। और मैं एंड करांगा एक छोटी जी अपनी गुरबाणी दी तुक तूं, बिसर गई सब तात पर आई, ना कोई बैरी ना बेगाना, सगल संग हमको बनाई। Lastly, I thank you all for coming here, especially these children. बच्चों, आप लोगों ने मेहनत करनी है, जहाँ तक पढ़ोगे ये पूरी कम्युनिटी आपके साथ है। आप अच्छे रिजल्ट्स लाओ, हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद कर सकेंगे। जो बच्चों को आगे ज़्यादा एडवांस स्टडी करना है तो कोशिश करेंगे, हमारा बड़ा समाज है उसमें कोई ना कोई आपको अडॉप्ट कर लेंगे। तो लास्टली अगेन थैंक यू ऑल द स्पीकर्स फॉर स्पेयरिंग योर टाइम, sharing your views with us. It's very kind of you. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you very much. In the end, I must thank everybody, all the distinguished our panelists who are here and the audience. और सबसे ज़्यादा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 84 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ they have come to the place and ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ already assurance ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, we will give them all the assurance. ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, we will give them assurance to go further in their life and get settled. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ I also like to thank the IIC for their support. Without their active support and help, it would not been possible to make this function a success. And I would request all the audience members here, kindly become member of this forum. Keep in touch with us. We do have some more programs coming between the Operation Blue Star and the November. 1 or 2 more seminars we do have it. And try and attend those seminars. They are very useful seminars. And question answer series part, on those seminars we will have that, because we have adequate time available. So thank you once again. Thank you very much.